Hello students, welcome to my channel Gitas Biology. Today topic biology question answer जोटा कि NEET पेपर रो question answer पिला माने जोटा कि 2025 रे 4 मे रे जो एग्जाम इछि तार आंसर पेपर जो पिला माने काउंट करिया पई चाहुचो से माने क्वेश्चन ला आंसर लेखे काउंट कर परिबो नहले क्वेश्चन को जदी आंसर जाना पई चाहुचो आंसर को भी जानि परिबो जो मानकर एग्जाम बहुत भलो हिची सेमाना पई बहुत बढ़िया कथा सेमानकर सिलेक्शन ए वर्ष हि जाउ सेति पई बेस्ट ऑफ लक किंतु जो मानक पई खराब हिची से माने जो माने ए ईयर रे प्लस 2 एग्जाम देछंती आउ अटेम्प्ट नेछंती एग्जाम नीट एग्जाम से मानक पई गोटे क्वेश्चन की तमे क्वेश्चन ला लेवल जानि गलो कि को लेवल ले क्वेश्चन आसुची जहा द्वारा नेक्स्ट ईयर पई गोटे प्रॉपर प्लान करे कि तमे प्रिपेयर हे परिबो ओके ये थिला तम मानक पई सजेशन कोनोसी दिनछ मन रखिबा माने मन दुख करबा कोनोसी आवश्यकता नाही काहे कि ना फेल्युअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस जोथरे फेल्युअर हेले आमे जानि परिबा कोन आम पाखरे भूल हेला ओके तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन देछि 91 नंबर क्वेश्चन देछि जोडा कि बायोटेक्नोलॉजी ऊपर क्वेश्चन देछि कि इन द above represented plasmid an alien piece of DNA is inserted of E. coli to 3Q. Which of the following strategies will be chosen to the select recombinant colonies? एठी correct answer direct mo answer को दोछ पिला माने correct answer is option 1 जोरा कि white color colonies will be selected. Okay, the next question जिबा question number 92 रे दिछि कोन the protein portion of an enzyme is called dash बहुत इटा इजी क्वेश्चन अछि प्रोटीन पार्ट को कोन कहा जाय apoenzyme prosthetic group cofactor coenzyme एटी करेक्ट आंसर इज apoenzyme is the protein part then next question कोन दिछि पिला माने ना 93 नंबर क्वेश्चन दिछि कि given below two statement वाला क्वेश्चन दिछि उतरे कि एक नंबर क्वेश्चन आसला स्टेटमेंट the primary source of energy in an ecosystem is solar energy होची source of energy आमे जानि चंती the rate of production of organic matter during photosynthesis is an ecosystem is called net primary productivity obviously आमे जानि चंती npp is equals to आमे कहि परिबा gross primary productivity minus r जोटा कि npp ओके तले ये तो करेक्ट आंसर अछि त माने स्टेटमेंट भी करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 भी जदि देखिबा हमें स्टेटमेंट 2 कथा कहिछि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किंतु एठी गोटे मिस्टेक देछि कोन ऑर्गेनिक मैटर रे देछि हमें जानि छथि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रे जो प्रोडक्ट बाहरुछि सेटा कोन ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रो नेट प्राइमरी नो डाउट सेटा को कुहा से बट डायरेक्ट से इकोसिस्टम को दोनी से कहा को दबो ना आमे डायरेक्ट कहि परिबा फोटोसिंथेसिस हे सला परे से गोटे प्लांट्स रो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आ सेकंड ट्रॉपिक लेवल को दोछि ओके ट्रॉपिक लेवल को दोछि तले दी करेक्ट आंसर कोन हबो स्टेटमेंट 1 करेक्ट देन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज नॉट द लाइट ऑफ the above statement choose the most appropriate answer given below statement 1 is correct but statement 2 is incorrect eta habo correct answer the next hame jiba 94 number question pila mane 94 number question dechi given below two statements one is labeled as a assertion and other one is reasoning this is a typical unfertilized angiospermic embryo sac at maturity जेतबे हे जाउछि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होछि आमे जानि छथि गोटे एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर रे ऊपर 1 2 3 त माने एठी तीनटा सेल प्रेजेंट अछि एठी गोटे दुइटा तीनटा सेल प्रेजेंट अछि एंड सेंटर रे अछि दुइटा न्यूक्लियस गोटे सेल दैट मींस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बट दिछि द एग apparatus has two polar nuclei किंतु आमे जानि छथि एग apparatus का को कहा जाय ना गोटे हला एग आ गोटे हला दुइटा साइनोर्जिड सेल साइनोर्जिड सेल को मिसे कि आमे कहउचंती ए दिटा को कहा जाय एग apparatus जदि एटा को कहा जाय एग apparatus ताहाले तो ए कंडीशन रे आम पाखरे या पाखरे दुइटा एक दुइ तीनटा न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि बट ए सगा दिछि टू पोलर न्यूक्लाई एग apparatus has two polar nuclei सेंटर रे अछि त एटा इनकरेक्ट हबो सो द करेक्ट आंसर इज assertion ठीक अछि बट रीजन इज नॉट करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर The next question देखिए देखो new plastic characteristics of cell refers to dash a mass of profiling cell na rapid growth of cell na inversion and damage to the surrounding tissue na those confined it to original location this question choose the correct answer from the option below option ru
कोटा करेक्ट अछि देखिया पई देछि आमे देखिबा जदी करेक्ट आंसर मास ऑफ प्रोपेलिंग सेल ये तो ठीक अछि देन रैपिड ग्रोथ सेल एटा भी ठीक अछि जोटा कि कैंसर सेल रे देखा जाए इन्वेसिव एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू ये भी ठीक अछि बट दोस कन्फाइंडेड द ओरिजिनल लोकेशन एटा ठीक नहीं सो द करेक्ट आंसर अछि ए बी सी आमे देखिबा ए बी डी देछि देन बी सी डी देछि देन ए बी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा 96 नंबर क्वेश्चन को पिला माने which one of the following is a characteristic feature of gymnosperm gymnosperm रा कोटा characteristic feature seed are absent but seed तारा present अछि seed are enclosed in fruit gymnosperm पाखरे fruit नहीं then dichi gymnosperms have flower for reproduction flower absent अछि gymnosperm only present in angiosperm so it is also wrong so the correct answer is option 4 काहेकि seed are naked ये ठीक अछि ओके देन 97 नंबर क्वेश्चन दिबा 97 नंबर क्वेश्चन रे दिछि मैच करिया पई दिछि जोथरे प्रोजेस्टेरोन दिछि रिलैक्सिन दिछि मेलानोसाइट दिछि स्टिमुलेटिंग हार्मोन देन ताटे तो एठी जदि हमें करेक्ट आंसर देखिबा हमें मैच करके देखिबा पिला माने ए रे दिछि प्रोजेस्टेरोन जार आंसर जदि हबो पार्स इंटरमीडिया ओवारी एड्रिनल मेडुला देन केपस तो एठी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी देन बी ऑप्शन देखिबा जदि बी ऑप्शन रो आंसर हबो कोन रिलैक्सिन दिछि जेतु ओवारी हबो then melanocyte कथा दिछि माने यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए then d दिछि जोरा कि करेक्ट आंसर आ गोटे रहिला दैट इज 3 सो द करेक्ट आंसर हमें देखिबा तो एठी हम पाखा दिछि ए कोन हबो ना ए देबो आईवी तो आईवी एथिरे अछि आ एथिरे अछि then b हमें कोन कहले 2i ये भी अछि एंड ये भी अछि then c रे देखिबा c हला i एथिरे अछि c i एथिरे अछि थर्ड i सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर Next question देखिबा पिला माने next question देखि which chromosome in the human genome has the highest number of gene obviously हमें जानि छि largest chromosome का पाखरे आ gene अछि dystrophin is the कोइ परिबा हमें highest number of gene present अछि that is chromosome 1 is the longest and smallest होछि chromosome number y यार मिलियन पर्यंत थिला बेले यार मात्र 200 something present अछि so the correct answer is option 1 is the correct answer then 99 number question देखिबा 99 number question रे कोन दिछि पिला माने which of the following statement about rubisco is true हमें जानि छथि rubisco जोटा कि photosynthesis रे प्रेजेंट अछि photosynthesis रे प्रेजेंट अछि आ ता सहित हमें जानि छथि it is the कोइ परिबा about dance enzyme in the world रे सबुठु about dance थिबा enzyme होछि कोटा na rubisco enzyme okay तो देखिबा it is a enzyme involved in photolysis of water ठीक अछि then this following statement true photolysis of water यूज होछि कि हमें जानि छै rubisco enzyme जोरा कि C3 cycle C4 cycle then C2 cycle involve होछि it catalyze the carboxylation of RUBP ये ठीक अछि rubisco RUBP रे ही यूज होछि it is active only in the dark सेमति नै कि डार्क कंडीशन ही एक्टिव हो it is higher affinity for oxygen na then carbon dioxide उल्टा कहला काहे carbon dioxide रो higher affinity as comparison O2 okay so the correct answer is option 2 is the correct answer then 100 number question को जवाब 100 number question कोन दिछि first menstruation is called dash हमें जानि छथि first menstruation को कहै छै menarche जोटा कि आ menopause कहै छै last okay so the correct answer is option 4 is the correct answer next question dichi 101 number of question dichi which of the following genetically engineered organism used by Eli Lilly to prepare application of biotechnology human insulin first time pai Eli Lilly जे कि prepare करथिले first time use करे पय तो कोटर यूज करथिले को organism रो ऑप्शन रे कोन दिछि वायरस दिछि देन फेज दिछि देन बैक्टीरिया दिछि देन इस दिछि सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 काहे बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम पे बाहर करथिले ओके ह्यूमन इंसुलिन नेक्स्ट देख Next question is given two statement. One is level assertion and another is region. So assertion all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. Region now the members of subphylum Vertebrata possesses notochord and during the embryonic period the notochord is replaced by the cartilaginous or bone vertical adult. It is the answer देखिबा एटी ऑप्शन assertion भी ठीक अछि आउ रीजनिंग भी ठीक अछि आउ ता सहित यार एक्सप्लेनेशन देखिबा जदी भी ये भी करेक्ट अछि सो द करेक्ट आंसर हमें कोटा नंबर देखिबा
both assertion reasoning be true heitibo au correct explanation heitibo. So the correct answer is option 3. Okay, then 103 number question देखिबा कोन दिछि. 103 number question is what is the function of spindle fiber during mitosis. आमे जानछन्ती spindle fiber structure mitosis माने cell cycle ru question आछि. Cell cycle and cell division ru question आछि. Okay पिला माने तो correct answer देखिबा to repair damaged DNA, then to regulate cell growth, then separate the chromosome, then synthesize the new. आमे जानछन्ती spindle fiber रो काम होछि separate करबा chromosome. So the option 3 is the correct answer. The next question जिबा next question कोन दिछि देखिबा. जो थ्रे के दिछि match the one list 2 को let one रे कोन दिछि ना Hershey and Chase experiment, then euchromatin, then Frederick Griffith experiment, then heterochromatin. Obviously बढ़िया question ते दिछि. It is दिछि एथे कोन ना Streptococcus pneumonia, then densely packed and dark strain, then loosely packed and light strain, the DNA as a genetic material. आमे जानछति confirmed करथिले छिए DNA as a genetic material सेटा का पाखरे छिबो ना Hershey and Chase experiment रे. सेमती हमें जाने चाहती यूक्रोमाटिन लाइटली बा लूजली पैक्ड, सेमती हेटेरोक्रोमाटिन डेंसली पैक्ड. तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जाने चाहते स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रे जोथरे के डिजीज कॉज्ड एस टाइप एंड अदर टाइप्स जो निथिले. ओके, सो द करेक्ट आंसर देखिबा जदी ए हुची कोन ना आईवी देखि देबा ए आईवी इथरे अछि आ इथरे अछि. तो बी कोन दिछि ना थर्ड आई दिछि, थर्ड इथरे दिछि एंड 2 आई दिछि. तो करेक्ट आंसर आसे गला. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 105 नंबर क्वेश्चन कोन दिछि. तो 105 रे दिछि 105 रा क्वेश्चन दिछि से लिस्ट 1 एंड 2 को करिया पे लिस्ट 1 रे दिछि adenosine, adrenalic acid, then adenine, then alanine. Then दिछि एटी कोन दिछि चूज द करेक्ट मैचेस. तो adenosine हमें जानिछथि adenosine स्ट्रक्चर देखिबा गोटे हम पाखरे न्यूक्लियोसाइड रो स्ट्रक्चर एना adenosine दिछि. हम जानछन adenine guanine cytosine adenine रो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर को कंबाइन करके दिछि. बढ़िया क्वेश्चन देछि पिला माने एडेनोसाइन ता जोडा हबो न्यूक्लियोसाइड पिला माने. सेमती एडेनिलिक एसिड केमथि हबो ना न्यूक्लियोटाइड हबो. ठीक सेमती एडेनाइन कोन ना गोटे कोन दिछि ना नाइट्रोजनस बेस. तो कोन हबो आई. ठीक सेमती एलानाइन कोन दिछि ना अमीनो एसिड गोटे. ओके, तो वन हमें आंसर देखिबा. आंसर रे कोन दिछि ए इज द थर्ड आई हबो. ए थर्ड आई कहार अछि यार बी अछि, देन यार बी अछि, देन यार बी अछि, देन बी अछि कोन ना 2i अछि, एटा 2i अछि आ कोथरे 8 2i अछि. देन सी दिछि कोन ना आई कोथरे अछि ना इथरे अछि. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन 106 रासी पहुंचले. 106 रे दिछि इन फ्रॉग ऊपर एक क्वेश्चन कहितला कि फ्रॉग ऊपर एक क्वेश्चन आछबो. द renal portal system in a special venous connected that acts to link, that is kidney and intestine, kidney and lower part body, and liver and intestine, and liver and kidney. So the correct answer is option 2 is the correct answer. जोटा कि kidney and lower part of the body. Then 107 number question पिला माने 107 रे question रे कोन दिछि which of the following are the post transcriptional events in the eukaryotic cell. Post transcription परे formation होछि. आमी जानते splicing, then exon intron जो difference होछि सेटा. तो सेथरे दिछि कोन ना transport of pre mRNA to the cytoplasm prior to splicing. तो ए ऑप्शन देखबा आज प्री आरएनए साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग हेबा फॉर्मेशन एटा. तो दिछि इवेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द. तो एठी हम देखिबा दी ए ता दिछु ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री आरएनए एटा हबो नाही. तो बी रे देखिबा कोन दिछि रिमूवल ऑफ इंट्रोल एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन. ये ठीक अछि. सेमती एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन द 5' एंड एचएनआरएनए ये ठीक अछि. कैपिंग एंड टेलिंग कंडीशन कथा कहूछि. Then दिछि addition of adenine residue in the 3' ये भी टेलिंग कथा कहूछि. Then base pairing of two complementary ये तो हुए नाही. So the correct answer देखिबा कोन ना B C D B C D B C D B C D. So the correct answer is option 4. Okay, the next question देखिबा पिला माने दिछि polymerase chain reaction PCR amplifies DNA following the equation 2n plus 1, 2n square and n square, then 2n. So the correct answer is जदि देखिबा polymerase chain reaction amplifies रला 2 to the power n होछि तारा correct answer. next question पुनी assertion reasoning ऊपर बहुत सारा question देखुछि पिला माने. assertion रे दिछि both wind and water pollinated water are not very colorful and do not produce nectar. ये तो correct अछि. Okay, so देखिबा
रीजन कौन देखिए द फ्लावर प्रोड्यूस एनोरमस अमाउंट ऑफ pollen grain in wind and water pollinated ये भी ठीक अछि बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिबा जदि एठी नाही सेठी आमे ताले कोन देखिबा both assertion and reasoning true but correct not correct explanation तो एठी देखि देखो नॉट पिला माने सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखि पिला माने 110 epiphytes that are growing a mango branches in the example of the following predation ना amensalism commensalism ना mutualism आमे जानिचंती कोनसे उडे ब्रांचेस उपरे जदि कोनसे टाइप रो एपिफाइट्स ग्रो करिछि तार रीजन होछि कोन ना सेमान को एयर एंड वाटर सेमान एटमॉस्फेयर ही वाटर वेपर को यूज करके सेमान अब्जॉर्ब करथांती से या ऊपर डिपेंड्स हेना थांती तो ए टाइप रो इंटरेक्शन जदि हुए कि कहा ऊपर डिपेंड करूनी बट यार पॉजिटिव बट यार कोनसी लाभ वा क्षति होनी तारे जीरो ताले पॉजिटिव एंड जीरो इंटरेक्शन रे आमे कहा को पढिचंती ना commensalism so the correct answer is option 3 okay then 111 number question ku jiba 111 number question kon dichi which of the following statement correct is in human pregnancy the major organ system are formed at the end of the 12th week ठीक अछि in human pregnancy the major organ system are formed in the 8th week ये भूल अछि in human pregnancy heart is formed after 1 month of gestation ये ठीक अछि then in human pregnancy the limb digits develops in the end of the second month ये ठीक अछि then human pregnancy the appearance of the hair is usually observed in the 5th month ये correct अछि so the correct answer is कोन हबो ना option 2 is the correct answer next question देखिबा next question कोन दिछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ पाखरे दिछि आइडेंटिफाई द बायोरिएक्टर जोटा कि ता बुक रो डायरेक्ट डायग्राम दिछि पिला माने यूज द फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पिला माने एनसीईआरटी तमे जानि छ बहुत टाइम एनसीईआरटी डायग्राम ऊपर सेटमेंट वाज है फोकस करा पिला माने डायग्राम ऊपर बहुत टाइम क्वेश्चन आसे एठी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए बी सी डी दिछि उठा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कहना फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन जे यूज करा जाय ओके so the next question ko jiba next question dechi ki frog respire in the water by skin and vocal cavity on land by skin and vocal cavity and lungs choose the correct answer from the following तो इट्स देछि कोन ना स्टेटमेंट करेक्ट अछि ना इनकरेक्ट अछि बट इट देछि कोन द स्टेटमेंट 1 एटा 1 इज द करेक्ट आंसर पिला माने डायरेक्ट म आंसर कहि दछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ adrenal medullary hormones it causes pupillary constriction then it is hyperglycemic hormone then it causes piloerection then it increases strength of heart contraction it is the correct answer is option 4 is the correct answer पिला माने जोथरे कि b c d is the correct answer b c d रो जो स्टेटमेंट दिछि से अछि करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जंची पिला मानक पाखरे पेशेंस नाही कि ताको एक्सप्लेनेशन पय एबे देखिबे एबे बस ताकर करेक्ट कोटा अछि इनकरेक्ट कोटा अछि देखिबार अछि तो फटाफट कहि दोछि पिला माने रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेक्ट आंसर कोन हबो एरे दिछि पिला माने parthenocarpic can be induced by auxin ये ठीक अछि then plant growth regulator can be involved in the promotion of as well as ये ठीक अछि then differentiation and redifferentiation देखा छै ये भी ठीक अछि then acidic acid plant growth regulating ये total inhibitor apical dominance growth lateral bond में the apical dominance normally promotes कौन ना lateral growth को बढ़ोछि माने त ये करेक्ट भी हबो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना ये भी करेक्ट होबनी कहीं ना lateral board कथा कहलानी अच्छा अच्छा lateral board ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पिला माने 116 नंबर क्वेश्चन which of the following hormones releases from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus रे formation करछि FSH ना ACTH ना LH ना ADH so the correct answer is option 4 is the anti diuretic hormone जोटा कि ADH hormone okay सेमति देखियो which of the following example is not distilled alcoholic beverage produced by yeast जोटा कि beer देछि rum देछि whiskey देछि brandy देछि so the correct answer is option 1 that is beer जोटा कि non distilled हिथाय okay तो गोटे हला beer आउट हला wine next question what is the pattern of inheritance in polygenic trait autosomal dominant pattern na X-linked recessive na Mendelian inheritance pattern na non Mendelian inheritance pattern era option 4 kana ye hla non Mendelian inheritance pattern
कहीं ना एको कुआ जाए से मानकर कहि परिबा माने लॉ को मानु नहांती माने मेंडल को मानु नहांती एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ भी कुआ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैच 1 एंड लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करबा देछि हेड मिडिल एक्रोसोम टेल ता माने स्पर्म रो स्ट्रक्चर देछि एंजाइम स्पर्म मोटिलिटी एनर्जी जेनेटिकल तो इथि हम देखिबा एर काम होछि कोन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थिबा ठीक अछि देन बी रो देखिबा जदी एनर्जी मिडिल पीस रो देन सेमिति सी रो आंसर कोन हबो पिला माने सी रो आंसर देखिबा तर ऑप्शन ए एंजाइम देन टेल कहिना एंजाइमेटिक रिएक्शन करूछि के एक्रोसोम जो हा द्वारा उभम रे होल करके एंटर करिया पे पड़छि देन टेल इज द स्पर्म रो मोटिलिटी इंक्रीज करूछि सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर डायरेक्ट आंसर कहि दोछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आमी जानि छथि एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम या ऊपर क्वेश्चन पड़छि पिला माने ईच ईयर ए क्वेश्चन पड़छि जाइगोमॉर्फिक रो करेक्ट आंसर देछि पी चिली पेटुनिया दतुरा इट करेक्ट आंसर अब कोन ना पी ओनली गोटे साइड ही ताको कट कले से दुई भाग हे परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन के नाइट्रोजन फिक्स कर परिबनी आजोरोबैक्टर ऑसिलेटरिया अनाबेना देन भल्वक्स नॉस्टॉक देन नॉस्टॉक देच भल्वक्स कथा कहबा सदी ये तो केबे भी स्टोर करे नाही चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन एट देछि कोन बी ओनली ई ओनली ए ओनली के करि परिबो नाही एठी भलबक्स चांस नाही ता सहित यदि अदर कॉम्बिनेशन देथा त मु ताको चूज करथांते तो जेहेतु ओनली देछि ताहाले ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 1 2 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कंडिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एक्स2 कंजर्वेशन ये आ गोटे स्टार पॉइंट वाला सब वाला पे क्वेश्चन गोटे गोटे आसुची Zoo and botanical garden, protected areas, national park, wildlife sanctuary. So the correct answer is option 1 is the correct answer. Who is the father of ecology in India? आमे जानते हैं रामदेव मिश्र is the father of ecology in India. Then देची 124 number question देची जो थे कि statement देची and हाँ देची कौन given below two statement देची पिला माने statement 1 in RNA world. RNA is considered is the first genetic material evolved. It is carry out for essential of life process. RNA act as genetic material and also catalyst for the some important biochemical reaction in the living system. Being reactive, RNA is unstable. Obviously, RNA is the unstable. ये तो ठीक अच्छी. But next देखिबा कौन देची in DNA evolved from RNA ये भी ठीक अच्छी and more stable than the genetic material ये भी ठीक अच्छी. It is a double helical strand ये भी ठीक अच्छी. Then evolution repairing mechanism ये correct अच्छी. So statement 1 भी correct अच्छी, statement 2 भी correct. So the correct answer is option 3. Okay. The next 125 number question. Given below two statements, that is statement 1 which is transfer of RNAs and ribosomal RNA do not interact with mRNA. And 3 con statement 2 con RNA interference takes place in all eukaryotic organisms at a method of cellular defense. ये correct अच्छी but ये incorrect. Okay. So the correct answer of statement 1 is incorrect and statement 2 देखिबा एठी option 2 is the correct answer. Okay. Next question पुनी मैच ऊपर question देछि पिला माने heart, kidney, gastrointestinal tract, then adrenal cortex. एठी कोन देछि erythropoietin, then aldosterone, then it is secretion, it is secretin देछि. Correct answer about option 2 is the correct answer. Okay. The next time I match करunanti. Next question. All living members of class cyclostomata are dash symbiotic na ectoparasite na free living na endoparasite. ये माने समस्त होचंदी ectoparasite. So the correct answer is option 2. Next question देखिबा streptokinase are produced by bacterium streptococcus. It is used by ये डायरेक्ट माइक्रोब्स रो क्वेश्चन पिला माने लिम्फो डिजीज ट्रीटमेंट ना रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल ना कॉर्ड फॉर्मेशन ना ये तो करेक्ट हबनी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि रूल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स दिछि कोन ना एठी दिछि करेक्ट आंसर कोटा हबो रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन ये ठीक अछि एक्सक्रीशन लोकोमोशन ना कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट of food ये ठीक अछि then digestion and respiration ये भूल अछि then digestion and respiration ये हबो नहीं so the correct answer A और C हबो देखि दवा A और C एठी अछि A और C
So option 4 is the correct answer. Next question 130 रो क्वेश्चन में देखिए कौन ना टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया, जिंको, पॉलीट्राइकम, देन साल्विनिया. साल्विया एंड साल्विनिया देखिए पिला माने कंफ्यूज हबनी. साल्विया एंड साल्विनिया. तो देखिबा ए रे देखिए टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट आमे जानि छथि साल्विनिया. ठीक समिति ब्रायोफाइट आमे जानि छथि पॉलीट्राइकम. सेमति एंजियोस्पर्म रो एग्जांपल आमे जानि छथि कोन ना आमे जानि नहति साल्विया प्राय तो पिला माने जानि नथिबा बट आमे जानि छथि जिम्नोस्पर्म रो एग्जांपल होछि जिंको. तो एटा को जदि आमे पाई गले तो अदर रहिला तो गोटे साल्विनिया साल्विया. ओके ये भी गोटे भी पॉलिनेशन रे भी गोटे एग्जांपल अछि इ प्लांट्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 131 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखबा व्हिच आर द करेक्ट व्हिच आर करेक्ट देछि पिला माने कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. ऑप्शन ए रे देछि जोटा कि करेक्ट अछि. देन केमोथेरापिक ड्रग्स आर यूज्ड किल द नॉन कैंसरियस सेल. ये ऑप्शन बी हबो नाही. देन सेमिति अल्फा इंटरफेरन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यूनो सिस्टम एंड हेल्प्स डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. ये ठीक अछि. पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केमोथेरापिक drugs are biological response modifier. ये भूल अछि. Then in case of leukemia blood can count decreases. ये भी भूल अछि. So the correct answer A and C. त देखि देबा A and C कोड अछि. A and C अछि. Option 3 is the correct answer. Next question पिला माने next question कोन देछि देखिबा what are the potential drawbacks in adaptation of IVF in vitro fertilization पिला माने high fertility risks to mother जोटा कि ठीक अछि. ठीक अछि हाई फर्टिलिटी. ओ अच्छा फर्टिलिटी देछि फर्टिलिटी नहीं फर्टिलिटी रिस्क तो जोथि पई कि ये हबो नहीं. एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट ये करेक्ट हबो. सेमिति हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर द डोनर ये इनकरेक्ट. देन लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन ये करेक्ट अछि. देन नॉट अवेलेबल इन इंडिया ये इनकरेक्ट अछि. The next possibility that an early embryo does not survive ये correct अछि. So the B agote D agote F. B D F. अच्छा option C is the correct answer. ताले next question देखिबा 133 number question कोन दिछि 133 number question दिछि कि अच्छा the reductive division of human female gametosis start earlier than the male gametogenesis. ये correct अछि. Then agode kon dichi pila mane the gap between first meiotic division and second meiotic division is much shorter for male compartment to compared to female. ये भी ठीक अछि. But dichi next question देखा दिछि पिला माने the first polar body associated with the formation of primary oocyte ये हबो नाही. ठीक सेमति ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सॉस leads to disintegration of endometrium onset of menstrual bleeding. ये भी हबो नाही. So the आमे देखिबा choose the correct answer from the option A आउ रे कोन हबो C A B ता correct हबो. A B हला correct answer. ताले next question को जिबा पिला माने next question कोन अछि देखा in bryophytes the gamma help following गेमा कप आमे जानि छथि जोटा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हेल्प करूची. न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैचर सेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल द करेक्ट आंसर अब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. हले नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिछि 135 नंबर क्वेश्चन कर दिछि जोते दिछि गिवन बिलो जोटा कि असोसिएटेड रीजन्स दिछि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गल्गी apparatus is to package the correct answer made by the endoplasmic The primary function of a Golgi apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum are delivered into the intracellular target and outside the cell. ये correct अछि. Vesicle containing material made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase or Golgi and माने Golgi apparatus actually पिला माने Golgi apparatus. They are modified by release the trans phase and of the Golgi apparatus. ये भी करेक्ट अछि. बट करेक्ट आंसर देखबा जदी ये करेक्ट आंसर हबो नाही. सो द करेक्ट आंसर में देखबा जदी 1 2 3 4 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर.
Then 136 number question. 136 number question is which of the following statement refers to reductionist biology? Chemical approach to study and understand living organism, behavioral approach to study, understand living organism, psychochemical approach to the study, understand the living organism, psychological approach to study, understand living organism. So the correct answer is option 3 is the correct answer. Next question देखिबा पिला माने next question कोन लिछि after maturation in primary lymphoid cell organs the lymphocytes migrates for interaction with antigen through secondary lymphoid organs or tissue like thymus, bone marrow, spleen, lymph node, then pairs patches. The correct answer about option 2 is the correct answer. तो माने C, D, E. C, और D and E is the correct answer. Next question पिला माने 138 number question कौन दिछि match one out wise the list को match करिवो तो evil quotes का कुआजे exit conservation cam जोरा के लंतारा ना डेंडोडो तो इट करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा 139 नंबर क्वेश्चन देखिबा 139 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन दिछि हाउ मेनी meiotic and mitotic division needs to occur the development of mature female gametophyte from a megaspore mother cell in a angiospermic plants इठी करेक्ट आंसर हबो 1 meiosis and 3 mitosis ना meiosis हेले megaspore formation करिवो then mitosis पर हेले embryo sac formation करिवो okay the next question is which of the following type of immunity is present at the time of birth and non specific type of defense in the human body इठी करेक्ट आंसर हबो पिला माने ऑप्शन 4 that is innate immunity. Next 41 number question करिछि देखिबा 41 number question is given below are two statements. Statement 1 fig fruits is non vegetarian fruits has enclosed in the correct answer यार जो देखिबा option 4 is the correct answer. Next question देखिबा 142 number question. 142 number question दिछि assessment reasoning question दिछि cellular tapetum possesses dense cytoplasm and generally have one more than one nucleus. ये correct अछि but are देखिबा presence of more than one nucleus in the tapetum increases efficiency of nourishing developing in the microspore mother cell ये भूल अछि. So the correct answer is option 1 is the correct answer. A is true and R is false. Then 143 number question condition statement given below choose the correct option को choose करा. The eukaryotic ribosome it are 80s and prokaryotic ribosomes are 70s. And each ribosome has two subunits, then two subunits 80s ribosome 60 and 40 and 70s ribosome 50 and 30. Then subunits 8 ribosome are 60s and 20s and 70s and 50s 20s. It is the correct answer. देखिबा हमें A, B, C are the correct answer. A, B, C. Last देखिबा थबी तो two subunits are 80s right is ना. So the correct answer is option 3 is the correct answer. Then 144 number question दिछि कोन which of the following enzyme contains heme as a prosthetic group succinic dehydrogenase na rubisco na catalase na carbonic anhydrase it correct answer aba option 2 is that is catalase. Next question दिछि कोन 145 number question which of the following what is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? Pulmonary veins, aorta, then vena cava, then pulmonary artery. So the correct answer is option 2, that is vena cava. Next question, Konichi, 146 number question is given below the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. What is the prothallus stage, then meiosis in the spore mother cell, then fertilization, then formation of archegonia and antheridia in gametophytes. Then transfer of antherozoids in archegonia in the presence of water. Then choose the correct answer from the option below. The correct answer aba option 3 is the correct answer. Should I get first aba B, B1 haba, then A haba 2, then D 3, then E haba 4, then asila 5. Okay. The next question देखिबा 147 number question. 147 number question कॉलेजी. The blue and white selectable marker have been developed with the differentiated recognized colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce colonies in the presence of homogenic
substrate given below two statement in this method. The blue color colonies have DNA insert in the plasmid. They are identified as a recombinant colonies. I would condition the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. The correct answer about option 2 is the correct answer. That statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Next 148 number question. 148 number question ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? Which of the following microbes is not involved in preparation of household product? Household product रे कोटा यूज होने Aspergillus niger, then Lactobacillus, then Lactobacillus ता मैं जानची थी दही रे, then Trichoderma polysporum, then Saccharomyces cerevisiae जानचंती Baker's yeast को हाज़ है, then Propionibacterium सम्मानी बैक्टीरियम ये भी चीज रितियारी रे यूज हो चीज ताले कोड़ा कोड़ा होनी ताले A और C होनी A और C, that is 4 is the correct answer. Next question पिलामाने next question कौन दिची? Silencing of specific mRNA is possible by RNAi because of non-complementary single-stranded RNA, complementary tRNA, complementary double-stranded RNA, inhibitory. Is the correct answer is option 3. The next question dichi pilamane, the complex Y of mitochondrial electron transport chain is also known as dash. Cytochrome C oxidase and cytochrome BC1, then DH dehydrogenase, then succinate dehydrogenase. The correct answer option 4 is the correct answer. Okay, the next question देखिबा पिलामाने, next question करिछि, while trying to find out the characteristics of newly found a animal, researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal, which could be the possible colon of the animals. The correct answer कौन हबो ना pseudocoelomate हबो correct answer, that is option 4 is the correct answer. Next question देछि कौन ना statement 1 and 2 देछि below the two statement in floral formula it stands from zygomorphic, but it stands करछि कौन ना actinomorphic रे symbol. ଆଉ other को देखिबानी ठीक सेमती in floral it stands from actinomorphic ये ठीक अछि, then G stands from superior ovary, ताहाले हमरा option 3 is the correct. So a option 2 correct काहेकि ना second statement ठीक अछि and first statement भूल अछि. Next question देछि पिला माने given below two statements, that is statement 1 ecosystem there is unidirectional flow of energy in the sun from the producer to consumer, ये तो ठीक अछि. Statement 2 कोन देछि पिला माने ecosystem are expected from second law of thermodynamics, eta incorrect अछि. Okay, so the correct answer is option 1 is the correct answer. Next 54 number question, which of the following is a unit productivity unit जोटा कि option 2 is the correct answer. Next question pedigree analysis ऊपर question जोटा देछि कोन देछि, which of the following given pedigree find out the probability and birth in a child no disease and being carrier has been. तो या ऊपर तो परे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेबे आउथरे जोटा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, कि एठी खाली आंसर को दोछि पिला माने ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 155 परे 56 question, in the seed of cereal the outer covering of the endosperm separated by the embryo by a protein rich layer जहां को से alluron layer. Okay, so the correct answer is option 2 जोटा कि मेज रे देखा है. Next question 57 number question कोन दिछि, match list 1 list 2 को मैच करिया पई. So the correct answer is option 4 is the correct answer. Direct answer कहि दोछि एको explanation आ गोटे वीडियो रे टोटल पार्ट करके explanation करिबा सबुदिन किछ question. Okay, the next question देखिबो 158 question, who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of 3 nucleotides. गोटेला मनोज गोटेला एडी correct answer of option 3 is the correct answer. Then histone are enriched in lysine and arginine, so the correct answer is option 3. Then 160 number question पिला माने 160 number question कोन दिछि, which of the following enzyme are not essential for the gene cloning, कोटा दरकार नै. Option restriction enzyme, then DNA ligase, DNA mutase, then recombinant, then DNA polymerase. इठी करेक्ट आंसर हम पकड़ाबो जोथरे कि डीएनए म्यूटेस रा तो आवश्यकता नाही, ता सहित डीएनए रिकॉम्बिनेज रा भी आवश्यकता नाही. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि, ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर
in a prokaryotic cell which help in the cell wall formation, DNA replication and respiration is dash. Cysta na endoplasmic reticulum na mesosome na chromatophore. आमे prokaryotic cell कथा दोची माने ये multiple function ର काम करूची, that is mesosome. Next question, 162 number question. Which factor is important for termination of transcription? It is rho, alpha, then gamma, then sigma. आमे जानिचंती rho factor is the termination factor. Which of the following statement is correct about location of male frog copulatory pad बोली ताकू कुहा जाय, जोटा कि करेक्ट आंसर हो फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब रो फर्स्ट डिजिट रे प्रेजेंट अछि. ओके, गोटे स्वेलिंग स्ट्रक्चर अछि सेटा को कुहा जाय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा फॉलोइंग जोटा कि प्रॉक्सिमली एंड नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर देछि पिला माने, जोथरे कि मो डायरेक्ट आंसर कहि दोछि पिला माने. यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. The next question is identify the statement that is not correct. Antigen binding site in the location C-terminal region in the antibody molecules. Constant region heavy. Your correct answer is the not correct. C-terminal region. It is empty C-terminus antibody molecules. Ye light chain ye thik achi. Each antibody has two light and two heavy. Ye bhi thik achi. And heavy light chain are held together by disulfide bond. Ye thik achi. But H2 condition de option 1 is the incorrect. Then 166 number question pila mane 166 number question re jothre ki ame direct dekhiba jodi scutellum, then non-albuminous, then epiblast, then perisperm yela embryo structure ku neki option A dekhiba jodi jota ki 2i haba cotyledon of the monocot seed re ame janchu scutellum present achi. So the non-albuminous seed ba non-endospermic seed kaha ko kuha jay jota ki groundnut. सेमिति एपिब्लास्ट भी मोनोकॉट स्ट्रक्चर जोटा कि पेरिस्पर्म टा होची कोन ना परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस ताला आगोटे रहला रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ कोटिलिडन जोटा कि मोनोकॉट प्लांट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Then 167 number question is find out the statement is not correct with regard of the structure of monocot stem. Vascular bundles are cosjoint and closed. Then hypodermis is parenchymatous. Then phloem parenchyma is absent. Then vascular bundles are scattered. The correct answer is option 3, that is hypodermis is parenchymatous. The next question is the twins are born to the ape family that lives next door to you. The twins are a boy and girl. Which of the following must be true? The correct answer option 4, that is they are fractional, fraternal twins. Then sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination to explain the evolution. It correct answer about analogy and agotekon analogy soita tasitachi conversion. Next question is which of the following phytohormones promotes nutrient metabolization which help in delay leaf senescence in the plant? So the correct answer is option 2, that is cytokinin. So the next question is why cannot insulin be used orally to diabetes patient? It option 4 is the correct answer. It is digested by gastrointestinal tract. The next question is the name of the class of enzyme that utilize catalyze following reaction. It is correct answer kanaba option 1 is the correct answer. Then 73 number question, 173 number question as given below are the two statements. So the correct answer kanaba direct answer kochi both statement 1 and statement 2 are correct. Then 174 number question kandichi the correct sequence event of the life cycle of the bryophytes. Kota haba correct sequence. First is na fusion of anthrozoids with the egg, na attachment of gametophyte to substratum, na reduction division to produce haploid spore, na formation of sporophyte, na release of anthrozoids into water. The correct answer about choose the correct answer from the option given below. It is option B. It achi you have 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Tale each sequence answer option A is the correct answer. Then 175 number question. 175 number question kandichi. Gene R and Y follow independent assortment.
यार करेक्ट आंसर भी हमें डायरेक्ट कहि दोछि पिला माने फिनोटाइप रेशियो जोटा कि 9:3:3:1. The next question जोटा दिछि each of the following characteristics represents a kingdom proposed by Whitaker. Arrange the following increasing order complexity of body organization. Multicellular heterotrophs with cell wall made of chitin, then hetero. It is correct answer about option 4 is the correct answer. Next 177 number question pila mane 177 number question centromere then xylem then crista then cell membrane. एठी दिछि कोन ना सेंट्रोमियर कहार पार्ट अछि सेंट्रोमियर हबो टुआई देन बी हबो कोन थाडाई जोटा कि सेल रो मूवमेंट देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम जानछंती माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट अछि देन आसा सेल मेम्ब्रेन जोटा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन दिछि पिला माने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स भलहस माने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को एगो कहा जाय पिल लॉजिस्टिक जोटा कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट दिछि यार भी देखिबा 179 रो करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर देन 180 नंबर क्वेश्चन को जबा 80 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन दिछि कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय डैश एठी हमर करेक्ट आंसर अब ए बी सी जोटा कि करेक्ट थिबारु एठी करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ओके ये थिला नीट क्वेश्चन रो आंसर शीट पिला माने नीट क्वेश्चन रो आंसर शीट जोटा कि 2025 रे आउ जो पिला माने 2025 रु 26 बेच पय प्रिपेयर हबो जो पिला माने नीट रो 2026 पय प्रिपेयर होचो से माने ए चैनल सहित कनेक्ट हेके थाओ न्यू बेच स्टार्ट होची पिला माने जोथरे कि आमे नीट वर्ष आरंभ ही प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करबा जहा द्वारा आम पाखर गोटे प्रॉपर रिजल्ट आमे पाइ परबा ओके ओके थैंक यू